अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल NFI तंगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पाइथन की कुछ प्रोग्रामिंग्स। टुडे वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल। सो वी हैव टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है जी। एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट वन प्रोग्राम इज राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। Now we have to write a program simply print hello world। ठीक है जी। जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो simply write the print function। ओके जी। सेकंड हमारे पास है the electricity bills for the last 3 months have been this and this and now you have to find the average of this। ओके जी। Now we have to find the average of given 3 months। So x equal to 23,000 plus 32,000 and plus 64,000। हमारे पास 3 months का बिल है। Now y equal to x by 3, क्योंकि एवरेज फाइंड करने के लिए हमने जस्ट एड अप एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स एंड फ्रेंड y। ठीक है जी। तो हमारे y में क्या है, एवरेज ऑफ दैट वैल्यू। सो दिस इज द एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज है और 3 वैल्यूज की हमने क्या कर दिया, एवरेज फाइंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज द फार्मूला। सो वी हैव टू इंपोर्ट मैथ एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिक्लेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल। So radius equal to 5 and now area equal to mat dot pi steric radius which is equal to 5 and radius steric power 2 है हमारे पास, pi r square is the formula। So now we have to print area of the circle is area which is stored in the area variable, or the area of the circle is this। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस 5 का सर्कल का क्या है, एरिया है। ठीक है जी, सर्कल का फार्मूला है। ओके व्यूअर्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।